Uh, just I need your introduction, so I get your basic detail, and I will go through. You are serving where and resting your subject and basic detail regarding your interest and job. Yes, sir. Okay, sir. Myself, Nidhi Sangani. I completed my master in JZ Shah College. Recently, I am working as an ad hoc lecturer in Vivekanand College. Subject is accountancy. Okay, okay. Working in Vivekanand College. Yes, sir. Okay. So the today's topic is corporate financial reporting. Just I am sharing the screen. I'll share the PDF also, and will share the video of this session also. Okay. Now you are able to see the screen. Yes, sir. Okay. So in basic, today we are going to discuss about the corporate financial reporting. So two words are there. First one is corporate. And again, I can say there are three words: corporate, financial, and reporting. So reporting, it means to note certain kind of things, to make a note, to report something. So that is able to make an evidence of the event. Okay, कुछ भी event हमने plan किए, कुछ काम किया, तो उसका अगर data हम record करेंगे, so it is a one kind of evidence of that event, of that kind of expenditure, of a certain kind of income. Okay, so if we will report it, तो उसका हमें पता लगेगा कि कैसे काम करना है. Okay. Now, the second word, जो reporting से आगे वाला word है, that is financial. So financial reporting, if we club both the words, so we have to make the reporting, but it is a kind of financial reporting. Okay, that will include profit and loss, okay, income and expenditures. So the thing that is relative with any kind of financial activities. So we have to record it. And the third word, that is corporate financial reporting. So we are running the company, a corporate company, a limited company, a public private company. So at the certain time period, we have to publish our financial reports, uh, as it is profit and loss account, balance sheet, cash flow statement, fund flow statement, director's report, auditor's report, certain thing that we have to provide to the stakeholders. हमें stakeholders को provide कर रहे हैं records. तो वो डेटा एक प्रॉपर फॉर्म में होना चाहिए, बट इट इज नॉट अ सेशन ऑफ, इट इज नॉट अ टॉपिक ऑफ टुडेज सेशन, बिकॉज वो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बताता है कि हर एक कंपनी को कौन से फॉर्मेट में या कौन से स्टैंडर्ड में वो रिपोर्ट प्रिपेयर करना है. Just today we will discuss how the company is able to record its financial statements, and what is the important, what is the objectives. Okay, थोड़े practical question भी देखेंगे. Okay, so just we will start with first thing, that is introduction. Okay, now today we are going to learn the introduction of the corporate financial reporting. Second one, development of financial reporting objectives. Okay, which are the objectives that is behind the development of financial reporting. Okay, so ऐसे कौन से ऑब्जेक्टिव थे जिनकी वजह से फिनेंशियल रिपोर्टिंग को डेवलप करना पड़ा. सेकंड, बेसिक, थर्ड वन इज बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ फिनेंशियल रिपोर्टिंग. उसके बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है. फर्स्ट सेकंड पॉइंट था डेवलपमेंट, वो कैसे डेवलप हुआ वो. थर्ड वन, बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है.
नेक्स्ट, इंडियन पर्सपेक्टिव इन फिनेंशियल रिपोर्टिंग। ओके, इंडियन पर्सपेक्टिव क्या वो भी देखेंगे। क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, ओके, ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स जो क्वालिटेटिव है, विच आर नॉट क्वांटिटेटिव, वो भी हम फिनेंशियल रिपोर्टिंग की कैरेक्टरिस्टिक्स विल आइडेंटिफाई। ASI disclosure of accounting policies, okay, directors report, auditors report, ये देखेंगे। One thing I left, that is notes on accounts in corporate annual reports. Okay, so introduction is a basic detail, okay, which include why it is necessary and what is corporate accounting, what is reporting। तो introduction ये बताता है कि कॉर्पोरेट अकाउंट में रिपोर्टिंग क्यों करना है। सो बेसिक ऑब्जेक्टिव यही है कि कंपनी के साथ जो भी रिलेटेड स्टेक होल्डर्स हैं, इट मे बी शेयर होल्डर्स, इट मे बी एम्प्लॉय, इट मे बी डायरेक्टर, ओके, सो हर एक पार्टी को, कंपनी को सेटिस्फाई करना है विथ प्रॉपर एविडेंस। सो वी हैव टू मेक अ प्रॉपर डॉक्यूमेंट कि जिनकी वजह से हम हर एक पर्सन जो कंपनी के साथ रिलेटेड है उनको हम आंसर कर पाए। सो these are the basic introduction of this. Now developments of financial reporting objective. Okay, so the subject of financial reporting objectives has been generally recognized as a very important in accounting area since long time। बहुत लंबे समय से accounting तो चल रहा है। Many accounting and professional institutes all over the world have made attempts to define the objective of financial statements and financial reporting, which are vital to development of financial accounting theory and practice। बहुत सारी जो firm है, they have made extraordinary efforts to identify the objective। Okay, so ऐसे बहुत सारे USA की कंपनी, UK की कंपनी है, those who have made the objectives। तो ये यहाँ पर बताया कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव, द पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव of financial statements are to present the most important word fairly। okay, fair practice हम present करें fairly and in conformity with generally accepted accounting principle। okay, जो भी प्रॉपर अकाउंटिंग के रूल्स है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उनको ध्यान में रखते हुए ये हम पूरा फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाए। फिनेंशियल पोजीशन, रिजल्ट्स ऑफ ऑपरेशंस, ओके, क्या क्या फेयरली क्या करना है, और जो जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स है उनको ध्यान में रख के क्या करना है। So one is financial position, we have to show it। Results of the operation, कंपनी जो ऑपरेट करती है, सेल्स, परचेज, उसके ऑपरेशन का रिजल्ट हमें चाहिए। एंड अदर चेंजेस इन द फिनेंशियल पोजीशन, उसकी फिनेंशियल पोजीशन में जो भी अदर चेंजेस हैं वो हमें चाहिए। ओके, now second, the general objective of the financial statement। first one, that is particular objective। now the general objectives, okay, to provide reliable information about the economic resources and obligations a business enterprise in order। point number one, evaluates its strength and weaknesses। कोई एक कंपनी खुद की स्ट्रेंथ और वीकनेस आइडेंटिफाई कर पाए, उसके लिए we have to provide the basic data। so financial statement जिससे बना on the base of the financial statement we can evaluate the strength and weakness of the company, strength and weakness। so it's फाइनेंसिंग एंड इन्वेस्टमेंट्स, कंपनी की फाइनेंसिंग मतलब कंपनी ने कहां से बोरो किया है। ठीक है, फाइनेंसिंग मतलब अदर यू हैव टेकन, आपकी पूरा कैपिटल स्ट्रक्चर, कितना इक्विटी कैपिटल है, कितना डेब्ट कैपिटल है। अगर डेब्ट कैपिटल है तो आपने कहां से बोरो किया है, लॉन्ग टर्म है, शॉर्ट टर्म है। ओके, सो दैट वी नीड टू आइडेंटिफाई। अगेन, अगर आपके पास फंडिंग ज्यादा है और आपका इन्वेस्टमेंट है तो आपने इन्वेस्टमेंट कहाँ किया है, that also can be identified from the balance sheet।
evaluates its ability to meet its commitments. कंपनी की एबिलिटी हमें आइडेंटिफाई करनी है कि जो भी उसने कमिटमेंट किया था वो पूरा कर पाएगी कि नहीं, एबिलिटी टू मीट इट्स कमिटमेंट। अभी कमिटमेंट क्या हो सकते हैं? तो अगर कोई कंपनी की कमिटमेंट्स हम देखें तो फर्स्ट होती है कि शेयर होल्डर्स को उनका डिविडेंड प्रॉपरली मिल जाए और एक हैंडसम अमाउंट मिले। शेयर होल्डर्स ये इच्छा रखते हैं कि उनका जो भी स्टेक है कंपनी में उनके ऊपर उनको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर मिलता रहे। ओके, जो भी क्रेडिटर्स हैं, जो बैंकर्स हैं, उनकी लोन रिपे हो जाए, क्रेडिटर्स को पेमेंट प्रॉपरली मिल जाए। सो दीज आर द कमिटमेंट्स ऑफ द कंपनी एंड सो इट्स रिसोर्सेज बेस्ड फॉर ग्रोथ। ओके, ग्रोथ करने के लिए कंपनी के पास कितने पोटेंशियल है, क्या ग्रोथ कर सकती है, तो ये हम बता सकते हैं। निधि जी, स्पीड प्रॉपर है ना? तो Yes, sir. Yes, sir. okay. Now, again, general objective point number B, to provide reliable information about changes in net resource resulting from the business enterprise. Now, net changes, okay, तो reliable information देनी है, वो तो हर एक जगह पर होगा, about changes in net resources. Okay, net resources मतलब जो भी earnings है कंपनी की, net earnings, उसके proper sources we have to define, resulting from the business enterprise profit directed activities in order, क्या करने के लिए, ये प्रॉफिट क्यों जानना है। सो पॉइंट नंबर 1, so to investors expected dividend return, if my net profit rate is higher, अगर प्रॉफिट रेट हायर है तो इन्वेस्टर्स ऑटोमेटिक ये जान जाएंगे कि हमें डिविडेंड अच्छा मिलने वाला है। ओके, सो इट इज बेसिक ऑब्जेक्टिव की जनरल ऑब्जेक्टिव है कि अगर कोई भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रॉफिट अगर आइडेंटिफाई करता है, if we can compare it from previous year, previous 2 or 3 years, or we can compare it from the other companies of the industry, तो जो शेयर होल्डर्स हैं वही आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने से हमें क्या रेट ऑफ रिटर्न, क्या डिविडेंड मिल सकता है। ओके, सो द ऑपरेशंस एबिलिटी टू पे क्रेडिटर्स, ओके, एंड सप्लायर्स, ये आ गया क्रेडिटर्स को कितना प्रॉपर पेमेंट हो जाए। ओके, विद इन 30 days, 40 days। ओके, मान लीजिए आज कोई क्रेडिटर्स ने सप्लाई किया है तो उसको मान 1 साल के बाद पेमेंट मिलेगा, सो दैट इज नॉट द रिलायबल थिंग। ओके, वो सप्लाई करना बंद कर देगा। ओके, सो क्रेडिटर्स एंड सप्लायर्स को भी पेमेंट प्रॉपर मिल जाए। प्रोवाइड जॉब्स फॉर द एम्प्लॉइज पे टैक्सेस, प्रोवाइड जॉब्स फॉर द एम्प्लॉइज। ओके, कॉमा नहीं है यहाँ पर, तो एम्प्लॉय को जॉब, ये भी प्रॉफिट से रिलेटेड, अगर कंपनी के पास प्रॉफिट अच्छा हो रहा है सो इट इज एबल टू पे द एम्प्लॉइज, पे द टैक्सेस। ओके, गवर्नमेंट के लिए प्रॉपर है कि गवर्नमेंट को टैक्स पे करना है। So if we are able to pay the taxes or not, we can identify it from the profit and generate funds from expansion. Okay, ये सब पेमेंट करने के बाद भी अगर कोई रिजर्व बचता है, ओके, अकाउंट में मोस्ट ऑफ द पार्ट, ओके, रिजर्व होता है। वैसे टैक्स तो हमेशा मना करता है कि करंट ईयर में कभी भी आप टैक्स एडमिसेबल एक्सपेंस नहीं है, सॉरी, प्रोविजन, कोई भी प्रोविजन टैक्सेशन अलाउ नहीं करता है। बट अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी में हम देखें तो हर एक बिजनेस प्रॉफिट में से थोड़ी अमाउंट रिजर्व के लिए कैरी करता है, दैट इज फॉर एक्सपेंशन, कोई मशीनरी परचेस करनी है, कोई डेफिसिट को कवर करना है, कोई फ्यूचर लॉस को कवर करना है, so we can make the reserve, okay, and surplus. Provide management with information for planning and control. Okay, मैनेजमेंट को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है और प्लानिंग एंड कंट्रोल, क्या प्लान करना है, तो मैनेजमेंट तो बहुत सारा प्लान कर सकता है। पूरा यूनिट एक्सपेंड करना, यूनिट यहाँ से बंद करके कोई दूसरी जगह पर ट्रांसफॉर्म करना, लेबर बदल रहे हैं, यहाँ के लेबर नहीं चल रहे, मतलब बहुत सारे ऐसे डिसीजंस है जो मैनेजमेंट को लेने होते हैं। सो प्लानिंग एंड कंट्रोल के लिए भी बैलेंस शीट उनको हेल्पफुल होती है, अकाउंटिंग स्टेटमेंट। so it's long term profitability. Okay, long term profitability भी हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हमें पता चलती है। now the third general objective, okay,
जनरल हमने पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव एक देखा जो फायर प्रैक्टिस का था. नाउ वी आर इन पॉइंट नंबर 2, दैट इज जनरल ऑब्जेक्टिव. उसमें दो हमने देख लिए. नाउ द थर्ड वन, टू प्रोवाइड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन यूजफुल फॉर एस्टिमेटिंग द अर्निंग पोटेंशियल ऑफ द फर्म. Now there are certain kind of models. अगर आप 2 या 3 या 4 साल के डेटा वो मॉडल में डाल दो, so you can get the future forecasting of the company. Okay, आप कंपनी का सेल्स क्या हो सकता है, कंपनी की पोटेंशियल क्या है, ये मॉडल्स. इवन certain students are doing PhD regarding this thing. They are forecasting model. अरीमा 2-3 फॉर्मेट है. अरीमा है, सेंट्रल मूविंग एवरेज है. ये फॉर्मेट आप यूज करके फ्यूचर फोरकास्टिंग कर सकते हो. सो विद द हेल्प ऑफ द बैलेंस शीट ऑफ 2, 3, 4, 5 इयर्स और 10 इयर्स, जितना बेस बड़ा आप उतना प्रॉपर फोरकास्टिंग कर सकते हो. सो कंपनी की पोटेंशियल हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं. टू प्रोवाइड अदर नीडेड इंफॉर्मेशन अबाउट चेंजेस इन इकोनॉमिक रिसोर्सेज एंड ऑब्लिगेशन. Okay, to provide other needed information, extra कोई information चाहिए about changes in economic resources and obligation. Okay, to disclose the information relevant to statements user need. Statements users need. Okay, कोई user को individual purpose से कोई statement चाहिए तो वो भी हम काम कर सकते हैं. Next, to disclose the information, point number 3, the qualitative objective. Okay, we have completed 2 kinds of objective. Number one, that is particular. Number 2, that is general. And number 3, that is qualitative. Qualitative objective. Okay, I will share this PDF. Okay, so you will don't worry about this. Qualitative objective. So qualitative objective of the financial accounting. Okay, first word, the in every point the first word is important. It should be relevance. Okay, now we are defining the qualitative objective, so we are not able to measure it in number. Okay, ये नंबर में हम नहीं बता सकते हैं. रिलेवेंस होना चाहिए. दैट मींस द डेटा वी हैड शोन इन द बैलेंस शीट शुड बी रिलेवेंस. ओके, वो हर एक टाइप से रिलेवेंस होना चाहिए. इररिलेवेंट हम डेटा नहीं लेके आए जिससे तो जो बताना ही नहीं है स्टेक होल्डर्स को, वो वहां पर हमने डाल दिया है और उसकी कोई वर्दीनेस भी नहीं है. सो द डेटा शुड बी रिलेवेंस फ्रॉम विच द स्टेक होल्डर्स कैन गेट द आउटपुट. ओके, सो relevance का मतलब है which means selecting the information most likely to add users in their economic decision. Okay, ऐसे टॉपिक सिलेक्ट करने, those are most likely. Okay, जो डिसीजन लेने के लिए, किसके लिए, इकोनॉमिक डिसीजन लेने के लिए, नॉर्मल डिसीजन नहीं, जो फाइनेंशियल डिसीजन है उसके लिए ऐसे सर्टेन पॉइंट्स वो आपके बैलेंस शीट में होने चाहिए. नंबर 2, अंडरस्टैंडेबिलिटी. ओके, ऐसा भी होना चाहिए कि हर एक पर्सन वो समझ पाए. ओके, ऐसे पॉइंट्स आपने बता दिए या ऐसे वर्ड्स लिखे जो कोई समझ ना पाए, सो इट डजंट मीन, ओके, वो बैलेंस शीट का कोई मतलब नहीं है. So again, understandability should be there, which implies not only that the selected information must be intelligible, but also the users can understand it. वो user intelligent तो होनी चाहिए, but वो user उसको समझ भी पाना चाहिए. Okay, verifiability. वो डेटा वेरीफाई हुआ होना चाहिए. ऐसे नहीं कि डेटा है और मैंने प्रेजेंट कर दिया. द डेटा मस्ट बी वेरीफाइड बाय द अथॉरिटी, और वेरीफाई होने के बाद ही वो वहां पर पब्लिश होना चाहिए. ओके, और वेरीफाई कर सके ये भी होना चाहिए. मान लीजिए कोई स्टेक होल्डर्स आ गया, ट्रेडर्स, बैंक और द एम्प्लॉय, और वो कंपनी के मैनेजमेंट को बोलेंगे भैया आपने जो ये पब्लिश किया है उसका मुझे वैलिडिटी बताओ, ये मुझे चेक करना है. तो इट शुड बी वेरीफाइबल. ओके, जो पब्लिश हुआ है
तो अगर कोई क्लेम करते आए तो वो कंपनी उसको सॉल्यूशन दे पाए, वैसा होना चाहिए। सिर्फ कागज पर सब वो ऐसा नहीं होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट न्यूट्रलिटी। ओके, वो न्यूट्रल भी होना चाहिए, which implies that the accounting information is directed towards the common needs of user rather than the particular needs of the specific user. Okay, क्या बताया? न्यूट्रलिटी मतलब हमें जो हमारा फोकस कौन है, जनरल पब्लिक। ओके, कॉमन नीड्स ऑफ द यूजर। ओके, हर एक पब्लिक जो भी उसकी कॉमन नीड्स को हम फोकस कर पाए, वो हमारा गोल है। ऐसा नहीं कि सिर्फ कोई स्पेसिफिक टारगेट हमें फोकस करना है। कंपनी के साथ रिलेटेड जितने भी स्टेक होल्डर्स है वो सभी कवर हो जाने चाहिए। सिर्फ एक पार्ट को मैं कवर करूं, कोई स्पेसिफिक पॉइंट को कवर करूं, ये नहीं होना चाहिए। सो इट शुड बी न्यूट्रल। टाइमलीनेस, ओके, ये हर एक पॉइंट क्वालिटेटिव है। ओके, टाइमलीनेस, तो वो टाइम बाउंड पर रेडी हो जाना चाहिए। मान लीजिए 31 मार्च 2023 अभी खत्म हो, सॉरी 24, ये अभी खत्म होने वाला है। सो ये डेटा अगर मैं 5 साल के बाद पब्लिश करूं, सो इट डजंट, वो कोई ऐसा आउटकम नहीं बताता है जिससे किसी को काम वो किसी को काम लग पाए। So the data should be published in stipulated time period. Okay, जहां पर उसका इंपॉर्टेंट है वहीं पर वो काम हो जाना चाहिए। okay? आग लगी है तो पानी डालना, वो तभी पानी डालना इंपॉर्टेंट है। आग बुझ जाने के बाद वो फायर ब्रिगेड वाला आएगा तो उसका कोई इंपॉर्टेंटनेस नहीं है। सो द टाइमलीनेस इज अगेन इंपॉर्टेंट, कि जो टाइम पर जो भी डेटा पब्लिश करना है, हर एक डेटा, ऐसा नहीं कि बैलेंस शीट, जो भी डेटा सर्टेन जो भी टाइम के लिए इंपॉर्टेंट है, वो टाइम पर वो पब्लिश हो जाना चाहिए। ओके, कंपेरेबिलिटी। अभी कंपेयर तो हम बहुत करते हैं। इवन वी कैन कंपेयर आवर डेटा विथ अदर कंपनी ऑफ द सेम इंडस्ट्री। ओके, मान लीजिए ऑयल एंड गैस का सेक्टर में दो कंपनी है, तो एक कंपनी दूसरी कंपनी के साथ कंपेयर कर सकती है, वो भी कर सकते हैं। एंड वी कैन कंपेयर विथ अदर इंडस्ट्रियल्स। ओके, सो वो कंपेरेबिलिटी हो जाए, ऐसी हमारी बैलेंस शीट होनी चाहिए। एंड लास्ट वन, कंप्लीटनेस। ओके, वो डेटा पूरा कंप्लीट फॉर्म में होना चाहिए। इफ वी विल प्रोवाइड द इंटरिम डेटा, ओके, कंपनी इंटरिम डिविडेंड भी प्रोवाइड करती है, बट आफ्टर सर्टेन टाइम पीरियड अप टू 31 मार्च, नाउ इट इज द लायबिलिटी ऑफ द कंपनी कि फाइनेंशियल ईयर खत्म होने के बाद उसको पूरा कंप्लीट डेटा ही प्रोवाइड करना है। ओके, आधी बैलेंस शीट या सिर्फ बैलेंस शीट हमने बता दिया, पीएनएल नहीं बताया, कैश फ्लो नहीं बताया, ऑडिटर्स रिपोर्ट नहीं दिया, स्टेक होल्डर्स को ऑडिटर्स रिपोर्ट हमने नहीं भेजे। ओके, सो इट इज नॉट अ कंप्लीट रिपोर्ट। ओके, सो रिपोर्ट भी कंप्लीट होना चाहिए जिसमें हर एक स्टेक होल्डर्स की हर एक क्वेश्चन का हम आंसर कर पाए। ओके, नाउ ट्रू ब्लड रिपोर्ट इज देयर। ये कमिटी थी, हमारे लिए अभी काम का नहीं है। कमिटीज फॉर्म्ड, जिसके चेयरमैन थे रॉबर्ट एम ट्रूब्लेट। सो उनके अंडर ये कमेटी बनी थी, जिन्होंने बहुत सारे रिसर्च किए थे अलग अलग कंट्री में, अलग अलग कंपनी के, और ये भी यही कंक्लूजन लाए थे। द कमिटी इज मेड फॉर टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। तो उन्होंने भी ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव्स दिए हैं जो आगे कवर हो चुके हैं, तो इसके ऊपर हम ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ओके, देखो ऐसे बताया, ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स टू सर्व प्राइमरी दोज यूजर्स हु हैव लिमिटेड अथॉरिटी। ओके, सो प्रीवियस टाइम पर जो आगे वाले ऑब्जेक्टिव्स थे, ये सब उसमें कवर हो चुका है। ओके, an objective of the financial statement is to provide information useful to investors, creditors. Again, it is covered. Financial statement is to provide users with the information for predicting, comparing, evaluating. Again, it is repeated. So I will skip this part. It is in homework. Okay, so just it is only of one page and not more important. Now, next topic is basic objectives of financial reporting. ऐसे कौन से बेसिक ऑब्जेक्टिव हैं? अगेन वी हैव सीन इन प्रीवियस, हमने तीन ऑब्जेक्टिव देखे थे, बेसिक, प्राइमरी, जनरल एंड क्वालिटेटिव। ओके, सो नाउ वी आर इन बेसिक ऑब्जेक्टिव्स
Okay, so first two paragraphs are regarding the introduction. Now the basic objectives are here from point number 1. Okay. Financial reporting is not an end in itself, but it is intended to provide information that is useful to making business and economic decision. So what is it? It is a thing that stakeholders can use for making decisions. Okay. Sorry for the interruption. The objectives of the financial reporting are not immutable. They are affected by the economic, legal, political, and social environment in which financial reporting take place. Okay, so ऐसे जो इकोनॉमिकल लीगल पॉलिटिकल डिसीजंस है वो भी इनसे इन्फ्लुएंस होते हैं. Next, the objective are also affected by the characteristics and limitations of the kind of the information that financial reporting can provide. Okay, इससे भी affect होते हैं. ये कौन से टॉपिक है? The information pertains to business enterprise rather than to industries or the economic as a whole. The information often results from approximate rather than exact measures. Okay, अप्रोक्सीमेट कोई भी डेटा अगर हमारे पास हमने प्रोवाइड किया है, सो इट इज ये कंप्लीटनेस वाला जो आगे क्वालिटेटिव टॉपिक था कि ऐसे ही हम कोई डेटा प्रोवाइड नहीं कर सकते कि सेल्स 1 करोड़ लिख दीजिए, ऐसा नहीं. द डेटा शुड बी एग्जैक्ट. ओके, एग्जैक्ट होना चाहिए वो, विच इज मेजरेबल. ओके, द इंफॉर्मेशन लार्जली रिफ्लेक्ट्स द फाइनेंशियल इफेक्ट्स ऑफ ट्रांजेक्शन and events that have already happened. Okay, जो ऑलरेडी हो चुकी है इवेंट्स, मतलब माने सेल्स हो चुका है. ओके, तो उसको हम रिकॉर्ड करेंगे. बट जो होने वाला है, मान लीजिए कल सेल्स होगा, सो इट इज नॉट एडवाइजेबल टू रिकॉर्ड. कल होगा या नहीं वो तो हमें पता ही नहीं है. ओके, हर एक ट्रांजेक्शन हम कब रिकॉर्ड करते हैं? हर एक ट्रांजेक्शन पास्ट इवेंट है. आफ्टर कंप्लीशन ऑफ द इवेंट हम उसको रिकॉर्ड करते हैं. तो उससे पहले तो हम उसको रिकॉर्ड भी नहीं कर सकते. ओके, तो इंफॉर्मेशन इज बट वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन. द इंफॉर्मेशन इज बट वन सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन नीडेड बाय दोज हु मेक डिसीजन अबाउट बिजनेस एंटरप्राइज. जो भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए, इट इज बट वन सोर्स, मतलब वो एक ही सोर्स होना चाहिए उसका. मान लीजिए सेल्स का आपको डेटा चाहिए, तो एग्जैक्ट डेटा बोले तो ये डिपार्टमेंट से ही मिलेगा हमें. So if you will ask other department और उन्हें बोल दे ऐसा लिख दो, तो ये नहीं होगा भाई. Okay, there should be certain a point of contact, और वो वही point of contact से हमें डेटा मिलना चाहिए. Okay, the information is provided and used at a cost. Okay, the objective in this statement, चलो इसको थोड़ा स्किप करता हूँ. अगेन इन्वेस्टर्स, क्रेडिटर्स, ये भी थोड़ा रिपीट हो रहा है. Okay, so these are the okay. Okay, we'll skip to the next point. Again, all these things are going to repeated. So next topic is Indian perspective in financial reporting. Okay, now what is the perception of the Indian countries? Okay, so this is notified in this. So again, general purpose of financial reporting is there. General purpose. So to whom we are going to satisfy. Okay, so all these stakeholders जो कंपनी में इंटरेस्टेड है, हर एक स्टेक होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए हमें ये काम करना है. ओके, सो जनरली स्पीकिंग
The term financial reporting is used to mean general purpose external financial reporting. Often it is said that the purpose of the financial reporting is the preparation of general purpose reports for external users. Okay. हम एक्सटर्नल यूजर्स को भी फोकस करेंगे. सो दिस जनरल पर्पस. ओके, कि एक्सटर्नल यूजर्स में भी क्या होंगे? द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंक्लूड्स प्रेजेंट एंड पोटेंशियल इन्वेस्टर्स. प्रेजेंट मतलब जो कंपनी में अभी इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, ऐसे इन्वेस्टर जिन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किए हैं, फंड प्रोवाइड किया है, स्टॉक प्रोवाइड किया है, दीज आर करंट. एंड द पोटेंशियल इन्वेस्टर्स मतलब जो हो सकते हैं. ओके, सो अगर कोई कंपनी की बैलेंस शीट को फोरकास्ट करेगा या बैलेंस शीट या कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करेगा, देन इट विल केम टू सर्टेन डिसीजन कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल इन्वेस्टर. ओके, एम्प्लॉइज, lenders, suppliers and other trade creditors, customers, government, their agencies and the public. ये हर एक स्टेक होल्डर्स हैं जो एक्सटर्नल पार्टीज है. ओके, माने इनमें से एम्प्लॉइज को तो हम इंटरनल बोल सकते हैं, बट बाकी सभी एक्सटर्नल पार्टीज हैं. They use financial statement in order to satisfy some of their different needs for information. These needs includes the following. Okay, तो अभी इन्वेस्टर की क्या नीड होगी? फर्स्ट वन है इन्वेस्टर, द प्रोवाइडर्स ऑफ रिस्क कैपिटल. भैया वो पैसे तो इन्वेस्ट कर रहा है हमारी कंपनी में, इन्वेस्टर है. ओके, सो लॉन्ग टर्म के लिए अगर उसने इन्वेस्ट किया, इवन इक्विटी शेयर होल्डर्स आर आल्सो द इन्वेस्टर्स. जो फंड प्रोवाइड करता है वो भी इन्वेस्टर है. तो द प्रोवाइडर्स ऑफ रिस्क कैपिटल and their advisors are concerned with the risk inherent and return provided by their investment. They need information to help them determine whether they should buy, hold or sell. Okay, देखो ऐसे बहुत सारे इन्वेस्टर्स होते हैं, they are able to make decision at their own. वो खुद डिसीजन ले सकते हैं. बट सर्टेन नहीं, बहुत सारे इन्वेस्टर्स ऐसे होते हैं, these are directed by certain person. मान लीजिए मुझे कोई कंपनी में इन्वेस्ट करना है, so I am not able to take decision. मैं वो कंपनी के बारे में जानता भी नहीं हूँ, कंपनी के पोजीशन क्या है, क्या मैन्युफैक्चर करती है, उनके पास कितना ऑर्डर है, I don't have any kind of information. So but certain kind of investors are there, or certain kind of mediators are there, not investors, we can say them mediators. They are able to make guide other person. वो दूसरे पर्सन को गाइड कर सकते हैं कि ये कंपनी में आइदर यू कैन इन्वेस्ट, अगर आपने इन्वेस्ट किया तो इसको सेल कर दीजिए. आइदर मान लीजिए डिफेंस सेक्टर, अभी थर्ड टर्म में भी सेंट्रल गवर्नमेंट में बीजेपी की गवर्नमेंट आने की पॉसिबिलिटी 99% है. तो डिफेंस सेक्टर, रेलवे सेक्टर, अगर ये स्टॉक आपके पास अवेलेबल है तो कोई भी किसी को भी आप पूछ लो, दे विल एडवाइस यू विल होल्ड दिस है, आप होल्ड करके रखिए इसको. ओके, सो आइदर विल सेल, बाय और होल्ड. ओके, शेयर होल्डर्स आर आल्सो इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन व्हिच enables them to access the ability of the enterprise to pay dividends. ओके, इन्वेस्टर जो फंड प्रोवाइड करता है उसको हम रिटर्न देते हैं इंटरेस्ट, एंड द पर्सन हु आर इक्विटी शेयर होल्डर उनको हम रिपे करते हैं डिविडेंड. इक्विटी शेयर होल्डर्स मतलब दे आर ओनर्स ऑफ द कंपनी, तो उनको इंटरेस्ट प्रोवाइड नहीं करना होता है. जो भी पार्ट बचा है उनमें से प्रॉफिट में से हम रिवर्स करेंगे. सो अगर डिविडेंड भी कितना पे हो पाए वो इन्वेस्टर के लिए इंपॉर्टेंट है. सेकेंड, एम्प्लॉइज. एम्प्लॉय एंड द रिप्रेजेंटेटिव मतलब जो उनके यूनियन को रिप्रेजेंटेटिव करता है. एम्प्लॉयज एंड द रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप्स आर इंटरेस्टेड इन इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टेबिलिटी एंड प्रॉफिटेबिलिटी. स्टेबल भी होनी चाहिए, कंपनी के पास प्रॉफिट आज तो बहुत बढ़िया है, बट बहुत सारे सेक्टर ऐसे हैं जो 2 साल तक इतने ब्लूम चले, फिर तीसरे साल वो कंपनी कहीं नहीं दिखेगी आपको.
तो द टू वर्ड, ओके, स्टेबल भी होना चाहिए और प्रॉफिटेबल भी होना चाहिए। स्टेबल मतलब यू कैन सी द विजन आफ्टर 15, 20, 25 ईयर्स, ओके, 25-30 साल तक का आप कंपनी का विजन देख सकते हो कि ये कंपनी स्टेबल हो, ये इंडस्ट्री स्टेबल है, ये कंपनी स्टेबल है, ओके। उसकी प्रॉफिटेबिलिटी, ओके, ये भी स्टेबल है, जिससे कंपनी मतलब जो उनकी सैलरी है वो हो पाए ऑफ देयर एम्प्लॉयर्स। They are also interested in information which enables them to access the ability of the enterprise to provide remuneration, retirement benefits and employment opportunities. उनको सैलरी, ये तो फर्स्ट उनका ये राइट्स है। एक तो रेम्यूनरेशन उनको प्रॉपर मिल जाए, ओके। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, अगर रिटायर हो रहे तो जो भी प्रोविडेंट फंड है, ग्रेजुइटी है, वो प्रॉपरली मिल जाए, पेंशन उनका प्रॉपर टाइम पर स्टार्ट हो जाए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज, ओके। एक मान लीजिए कि आप आपने आपका करियर कोई एक कंपनी में जहां से स्टार्ट किया, बहुत सारी कंपनी ऐसी होती है, इफ यू आर आप में पोटेंशियल है तो कंपनी आपको कहां से कहां पहुंचा देती है, इफ यू आर एबल टू, अगर आप में वो पोटेंशियल है तो हर एक में ये नहीं होता है, बट वो ऐसे एम्प्लॉय आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये कंपनी में जॉब करने जैसी है, क्योंकि यहाँ पर हर एक साल इंक्रीमेंट होता है, इंक्रीमेंट भी होता है, हमारी पोजीशन में भी अपलिफ्टमेंट मिलता है, प्रमोशन होता है, ओके। तो एम्प्लॉय के लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी इंपॉर्टेंट है, ओके। लेंडर्स, ओके, लेंडर्स को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बैलेंस शीट से? अगेन आई एम रिपीटिंग, अभी हम क्या देख रहे हैं कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट या वो रिपोर्टिंग से कौन सी पार्टी क्या इंफॉर्मेशन गैदर करना चाहती है, ठीक है। वी हैड सीन इन्वेस्टर, इन्वेस्टर तो प्रॉफिट देखता है, भैया प्रॉफिट होना चाहिए जिसमें से उसका इंटरेस्ट निकल पाए, उनको लोन रिपे हो जाए, उनका डिविडेंड मिल पाए। एम्प्लॉय क्या चाहता है, उसका सैलरी उसको मिलता जाए, रिटायरमेंट बेनिफिट उनको कंटिन्यूएशन मोड में मिले एंड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी उनके लिए इंक्रीज होती जाए। थर्ड वन, लेंडर्स, ओके। लेंडर्स मतलब ओके, इन्वेस्टर्स को जो ऊपर वाला पॉइंट था इन्वेस्टर, उसको भी हम सिर्फ शेयर होल्डर्स में जो इक्विटी में इन्वेस्ट करेंगे उसी को कंसिडर करेंगे, because lenders word again is given. Now lenders means who are lending money to the company, okay. Lenders are interested in information that enables okay, information enables them to determine whether their loan and their interest, okay। दो ही पॉइंट चाहिए, तो मेरा पैसा जो मैंने दिया लेंडर्स उनको देख, तो वो पैसा सेफ होना चाहिए और मुझे हैंडसम इंटरेस्ट भी मिलता रहे और टाइम टू टाइम मिलता रहे, ऐसा नहीं कि आज का इंटरेस्ट 5 साल के बाद मिले। तो लोन भी उसको रिपे होती जाए और इंटरेस्ट भी मिलता है, इंटरेस्ट अटैचिंग टू देम विल बी पेड व्हेन ड्यू, जब उसका टाइम हो जाए वो वही टाइम पर वो उनको मिल जाए, ओके। सप्लायर्स एंड अदर ट्रेड क्रेडिटर्स, ओके, जो भी सप्लायर्स हैं, ओके। अभी तीन टाइप, ये थर्ड पार्टी हुई। फर्स्ट वन वो था इन्वेस्टर जो इक्विटी में इन्वेस्ट करता है, दे आर द ओनर ऑफ द कंपनी। लेंडर्स मतलब जो लॉन्ग टर्म के लिए फाइनेंस प्रोवाइड करते हैं। फोर्थ वन मतलब सप्लायर्स, सप्लायर्स एंड अदर ट्रेड जो गुड सप्लाई करते हैं, स्टॉक सप्लाई करते हैं, ओके, क्रेडिट पर। So suppliers and their other creditors are interested in information that enables them to determine whether amounts owing to them will be paid when due. Okay, it is paid. Will be paid when due. जब वो due हो जाए, वो payment हो जाए. Trade creditors are likely to interested in an enterprise over a shorter period than lenders unless they are dependent upon the continuation of the enterprise as a major customer. वो साइकिल जितनी छोटी हो जाए पेमेंट की, मान लीजिए आज कोई क्रेडिटर्स ने गुड सप्लाई किया, 5 करोड़ का सामान आया और उसको मैं 5 महीने बाद पेमेंट दूं, तो वो जहां से क्रेडिट पर लेके आया उसने भी कहीं से खरीदा है और हमने सप्लाई किया है, तो उसको भी रिपे करना है किसी को। तो मतलब मान लीजिए उसको 1 महीने बाद पेमेंट करना है, तो हमारा पेमेंट 1 महीने से पहले हो जाए तो उसके लिए वो दिक्कत नहीं होगी, बट उसको पेमेंट करना है 1 महीने बाद और हम 5 मंथ्स के बाद हम उसको पेमेंट करेंगे, तो इट इज पेनफुल फॉर हिम, तो ये भी नहीं होना चाहिए। कस्टमर्स, ओके। नाउ कस्टमर को क्या इंफॉर्मेशन चाहिए बैलेंस शीट से? कस्टमर्स हैव एन इंटरेस्ट
in information about the continuance of the enterprise, especially when they have a long-term involvement which or are dependent on the enterprise. मान लीजिए आप जो भी प्रोडक्ट यूज कर रहे हो वो कोई एक ही कंपनी बना रही है, तो व्हाट विल अज्यूम कि ये भाई प्रोडक्ट तो मुझे मिलती रहनी चाहिए, ओके, ये तो बंद नहीं होना चाहिए, ओके। तो कंपनी भी स्मूथली रन हो, इससे हमें भी बेनिफिट है। Government and their agencies. Now, legally, we have to pay taxes to government. Okay, corporate tax का 30% ratio है. If we are making long-term capital gains, we have to pay 20, and if it is short-term capital gain, we have to pay 15%. So three criteria are there: 15%, 20%, and 30% for corporate taxes. So government को भी ये interest है कि कंपनी का प्रॉफिट जितना भी इंक्रीज हो उसमें वो गवर्नमेंट का ही बेनिफिट है। अगेन एवरी कंपनी इज लायबल टू मेक CSR, ओके, उनके प्रॉफिट से उनको 2% लोकल एरिया में ये बेनिफिट करना है, सो 2% कंट्रीब्यूशन भी उनको करना है। सो गवर्नमेंट्स एंड देयर एजेंसीज आर इंटरेस्टेड इन द allocation of resources, and therefore the activities of the enterprises, okay, they also require information in order to regulate the activities of enterprise. Again, देखो गवर्नमेंट को वो टैक्स में तो इंटरेस्ट है, बट वो बैलेंस शीट या फिनेंशियल स्टेटमेंट्स ये आइडेंटिफाई करती है कि कंपनी के जो भी ऑब्जेक्टिव है, मान लीजिए अभी पेटीएम का पेमेंट बैंक था तो उसने RBI ने उसको रेगुलेट कर दिया, ओके। सो यही डिटेल्स होती हैं जो अथॉरिटी को डिसीजन लेने के लिए हेल्पफुल करती है, ओके। सो द सेम थिंग, जो भी बैलेंस शीट है उनसे गवर्नमेंट को भी ये बेनिफिट होता है। गवर्नमेंट को ये इंफॉर्मेशन चाहिए कि कंपनी में क्या कंट्रोल करना है, कंपनी के पास टैक्स क्या कलेक्ट करना है, कि क्या पॉलिसी फ्रेम करनी है। डिटरमाइन टैक्सेशन पॉलिसीज एज द बेसिस फॉर नेशनल इनकम एंड सिमिलर स्टेटिस्टिक्स। एंड लास्ट वन, पब्लिक, जो जनरल पब्लिक है, ओके। एंटरप्राइज अफेक्ट मेंबर्स of the public in a variety of ways, okay, बहुत सारे ways में जनरल पब्लिक को कंपनी अफेक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल, एंटरप्राइज में मेक अ सस्टेनेबल कंट्रीब्यूशन टू द लोकल इकोनॉमी in many ways, including the number of the people they employ, okay, जो एरिया में कंपनी काम कर रही है वहां एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ओके, their patrons of local suppliers, okay, local supplier का भी बिजनेस होता है, एम्प्लॉयबिलिटी क्रिएट होती है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में assist the public by providing information about the trends and recent developments in the prosperity of the enterprise and the range of its activities, okay. So these are general purpose, okay. अगेन जनरल हमने कंप्लीट किए। जनरल में हमने क्या देखा कि कंपनी जो भी फिनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है वो जनरली जो भी पार्टीज है वो उनमें से कौन सा उसका विजन क्या है, ओके। स्टेटमेंट एक ही है बट देखने का नजरिया अलग अलग है। इन्वेस्टर देखेगा कि कंपनी के प्रॉफिट क्या है, ओके, मतलब प्रॉफिट में से हमें डिविडेंड कितना मिल सकता है, ओके। जो सप्लायर्स है वो देखेगा कि मुझे मेरा पैसा कितना स्पीडी मिल जाए, ओके। सो फ्रॉम द सिंगल स्टेटमेंट एवरी पार्टी इज एबल टू आइडेंटिफाई इट्स ओन इंफॉर्मेशन, ओके। खुद का नजरिया अलग अलग है हर एक पार्टी का, तो उसके अकॉर्डिंगली वो विजन क्रिएट करके डेटा डिफाइन करेगी। नाउ स्पेसिफिक पर्पस, स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट मतलब कोई आपने कोई एक पर्पस को आइडेंटिफाई करके एक रिपोर्ट बनाया है, ओके, उसको हम बोलेंगे स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट। जो आगे हमने कैरेक्टरिस्टिक में देखा था कि भाई फाइनेंशियल रिपोर्टिंग इट इज इन काइंड ऑफ जनरल नेचर, बट मान लीजिए कंपनी ने कोई गवर्नमेंट ने कोई आपको नोटिस दी है जिसके रिगार्डिंग आपने कोई स्पेशल रिपोर्ट बनाया है, तो इट इज काइंड ऑफ स्पेसिफिक पर्पस रिपोर्ट। आपने इन्वेस्टर के लिए कोई रिपोर्ट बनाया है, आपने लैंडर्स के लिए कोई रिपोर्ट बनाया है, आपने गवर्नमेंट के लिए कोई रिपोर्ट बनाया है। सो इफ वी हैड प्रिपेयर्ड द रिपोर्ट
by taking into consideration of a single party to help them to make decisions. तो उसको बोलेंगे हम specific purpose report. Now, these are in detail qualitative characteristics. Okay, those terms we are not able to consider in number. Okay, but उनकी क्वालिटी से हम उसको मेजर कर सकते हैं. Okay, so जो हमने आगे शॉर्ट में देखा था, नाउ इट इज इन डिटेल कि अंडरस्टैंडेबिलिटी क्या है, रिलेवेंस क्या है, रिलायबिलिटी क्या है, कंपेरेबिलिटी मतलब क्या है. सो विल आइडेंटिफाई इट. Point number one, that is relevance. Now, निधि जी आप बताएंगे रिलेवेंस, अभी थोड़ा हम इंटरेक्ट भी करेंगे, सो यू विल नॉट गेट बोर्ड. ओके, रिलेवेंस में क्या इंपॉर्टेंट, मतलब फिनेंशियल स्टेटमेंट में रिलेवेंस का इंपॉर्टेंट क्या है? हेलो, हेलो. Hello. हाँ, I'm asking to this, what is the importance of relevance? Okay, so we'll make two-way communication, so you will not get bored. Okay, because initially we are in theory part. Again, I'm having practical problems in this chapter, तो वो solve करेंगे तो उसमें कोई दिक्कत नहीं. But now we are in the theory part, so I think two-way communication should be there. तो what it means by relevance, हम relevance आप कोई भी लैंग्वेज में मुझे आंसर कर सकते हैं. If you are able to, if you are comfort in Gujarati, you can speak also. Relevance का important क्या है? नहीं पता आपको? हेलो, are you able to hear my voice? Hello. Are you there?
Okay, so I will continue. Are you able to see the screen now? Okay, so the relevance should be there. Relevance is closely and directly related to the concept of useful information. Okay, data provided by the company must be useful information. Okay, unuseful data provide करके हमें कोई ये नहीं है. Okay, so data useful होना चाहिए. Relevance implies that all those items of the information should be reported that may aid the users in making decision or prediction. डिसीजन लेने के लिए जो भी डेटा चाहिए वो वहां पर होना चाहिए. In general information that it given greater weight in decision making is more relevant. Okay. Specifically, it is information's capacity to make a difference that identifies it as relevant to the decisions. Okay. So data relevant होना चाहिए. Relevant accounting information must be capable of making a difference in a decision by helping users to form predictions about the outcome of the past, present, and future event, or to confirm or correct expectations. Okay, so in short, जो भी relevance data है जो decision making के लिए proper है वो हमें बताना चाहिए. No, point number 2, reliability. Okay, the data must be reliable. Okay, trustworthy. Reliability is described ना 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 वो चालू रखो. Okay, sir. Okay. Okay, so hold for 1 minute. I will share the screen. Okay, so we'll start with the previous. Data must be relevant. Data relevance होना चाहिए जिसकी वजह से the important data we have to provide must be there. Okay, जो relevance data है अगर वो वहां पर नहीं है so the stakeholders में lead कोई दूसरी डायरेक्शन में उनका डिसीजन जा सकता है. so decision making के लिए prediction के लिए जो भी relevance data है that we have to provide. Now reliability. So what is mean by reliability? Nidhi, you can told me what is the meaning of reliability. Even you can read the paragraph and take a meaning out of it. You can see the screen. So what is the meaning of reliability? Are you able to hear my voice? Yes, sir. Okay. So what is the meaning of reliability? आपको जो भी समझ में आप बता सकते हैं मुझे. Reliability, it means कि
करेक्ट डेटा होना चाहिए, यानी कि जो फेयर डेटा है। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में अगर हम डेटा पुट करते हैं तो डेटा जो है वो एग्जैक्ट होना चाहिए, यानी कि हमें उसमें मिस रिप्रेजेंट नहीं करना है। ओके, सो इट शुड बी रिलायबल। ओके, रिलायबिलिटी मतलब कोई उस पे ट्रस्ट कर सके ऐसा होना चाहिए, इट मस्ट बी रिलायबल। ओके, सो रिलायबिलिटी डिस्क्राइब्ड एज वन ऑफ द टू प्राइमरी क्वालिटीज, रिलेवेंस एंड रिलायबिलिटी। ओके, एक फर्स्ट हमने देखा था रिलेवेंस, second one is reliable that make accounting information useful for decision making. Reliable information is required to form judgment about the earning potential and financial position of a business firm. Reliability differs from item to item. Reliability item to item differ होती है. Some items of the information presented uh, in an annual report may be more reliable than others. Okay, for example, information regarding plant and machinery may be less reliable. Okay, क्यों less reliable है? So plant कोई भी fixed assets, we are charging depreciation and depreciation is non-cash expenditure. Everyone knows. Okay, वो हम pocket में से pay नहीं करते हैं, but we are charging depreciation बिकॉज वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट से हम आफ्टर 5-10 years के बाद नया प्लांट और मशीनरी परचेस कर सके. ओके, सो इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग प्लांट एंड मशीनरी मे बी लेस रिलायबल देन सर्टेन इंफॉर्मेशन अबाउट करंट एसेट्स बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन अनसर्टेनिटी ऑफ रियलाइजेशन. ओके, अंडरस्टैंडेबिलिटी, जो डेटा हमने प्रोवाइड किया है. ओके, even in my next session we will go through practical problems. Okay, so even then we will identify कि कोई learned person तो statement को identify कर सकता है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मान लीजिए मैंने आप कोई भी कंपनी ने मुझे पर्सनली कोई फाइनेंशियल रिपोर्ट दिया है, तो आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट. बट अ लेमैन, ओके, कोई इलिटरेट पर्सन है जिसको इन्वेस्ट करना है, जिसको बैलेंस शीट समझ में नहीं आती है, बट उसके पास फाइनेंशियली वो स्ट्रांग है, तो इफ ही वांट टू इन्वेस्ट हिज मनी इन एनी कंपनी, तो वो डिसीजन कैसे ले पाएगा? तो अगेन देयर आर सर्टेन रिपोर्ट्स कि कोई बहुत सारी कंपनी एज एन इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज नॉट मैंडेटरी, बट बहुत सारी कंपनी अभी प्रिपेयर करती है, वो नेक्स्ट सेशन में हम वो भी देखेंगे कि कौन से रिपोर्ट मैंडेटरी है और कौन से हम सिर्फ एज अ कंप्लायंस, एज अ अंडरस्टैंडेबिलिटी, कोई नॉर्मल पर्सन वो समझ पाए, इसके लिए हम बनाएंगे. ओके, you and me both can understand profit after tax, profit before tax, dividend, taxes, because we can know the hierarchy: profit before tax minus interest minus tax. Okay, sorry, minus tax, in first interest minus tax minus dividend. Okay, so this hierarchy we can know which are the expenditure that can be absorbed in P&L account. Some expenses are we can absorb them in trading account, so we are able to know that. अगर कोई मुझे बता देगा कि भैया ये नहीं है, तो मैं तो उसको जस्टिफाई कर सकता हूँ कि भैया आपने ये गलत किया, बिकॉज आई एम एबल टू अंडरस्टैंड इट, आई एम एबल टू नो द क्लॉजेस. मान लीजिए किसी ने डेप्रिसिएशन चार्ज किया प्लांट मशीनरी के ऊपर 25%, 25%, सो आई कैन चैलेंज इट कि भैया एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आप यू कैन चार्ज मैक्सिमम 15%. ओके, तो ये हम चैलेंज कर सकते हैं बिकॉज आई एम एबल टू नो ओके द क्लोजेस. वेट फॉर 1 minute. ओके, सो अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए रिपोर्ट की. Understandability is the quality of information that enables user to perceive its significance. Okay, the benefit of information may be increased by making it more understandable. The benefit of information may be increased by making it more understandable. Okay, डेटा एक ही टाइप का है. मान लीजिए स्वीट की दुकान पर रॉ मटेरियल जो है वो खोया खोया जिससे स्वीट बनती है. ओके, तो वो एक ही टाइप का है, बट उससे अलग अलग टाइप की स्वीट बनती है. So here the same rule will be applicable.
डेटा को आप कौन से फॉर्म में प्रेजेंट कर रहे हो जिससे वो जो पार्टी के लिए यूजफुल होने वाला है उसको डायरेक्टली काम आ जाए. ओके, सो आई एम रिपीटिंग द स्टेटमेंट अगेन. द बेनिफिट ऑफ द इंफॉर्मेशन मे बी इंक्रीज्ड. वो इंक्रीज हो सकता है किससे? बाय मेकिंग इट मोर अंडरस्टैंडेबल. कोई भी डेटा को जो पार्टी है उसके रिगार्डिंग हम प्रेजेंट करें तो वो अंडरस्टैंडेबल हो सकता है और उसकी इंपॉर्टेंटनेस भी बढ़ सकती है. And hence useful to wider circle of the users. Presenting information which can be understood only by sophisticated users and not by others create a bias which is inconsistent with the standard of adequate disclosure. Okay? So it means the outcome of this topic कि डेटा हम जो भी प्रेजेंट करें it should be understandable. Next one, comparability. Okay, again I am repeating, today is the first session of the this topic, so we are in the starting phase कि financial report कैसे बनेगा, उसका बेस क्या है, what is the outcome of it. Okay, वो हम लास्ट में जाएंगे, but what is the importance of it, वो हम क्यों बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे. Okay, so we are in the line कि हम ये समझ पाए कि ये बेसिक क्या है. Okay, तो ये कंपेरेबल भी होना चाहिए. इकोनॉमिक डिसीजन रिक्वायर्ड मेकिंग चॉइस अमंग पॉसिबल कोर्सेज ऑफ एक्शन. ओके, इकोनॉमिक डिसीजन मतलब इफ यू वांट टू सिलेक्ट समथिंग, मान लीजिए आपको मार्केट में आज गए और मार्केट से आपको कोई एक प्रोडक्ट परचेस करनी है. ओके, सो एक शॉप पर वो 100 रुपीज की मिल रही है और दूसरी जगह पर आपने उसको छोड़ दिया कि भाई 100 रुपए की मुझे नहीं लेनी है. आफ्टर मूविंग फर्दर आपको तीसरी थर्ड या फोर्थ शॉप पर वही सेम प्रोडक्ट, वही सेम क्वालिटी की, वही सेम कंपनी की वो 80 रुपीज में मिल रही है. तो वी कैन थिंक कि वहां पर वो 100 की थी, यहाँ पर वो 80 रुपीज की. बट व्हाट इज इम्पोर्टेंट, कंपनी इज सेम, क्वालिटी इज सेम, डिजाइन इज सेम, ऑल द थिंग इज सेम. ओके, मुझे जो पसंद थी वही ये है. ओके, उसकी क्वालिटी में कोई फर्क नहीं है, कंपनी में कोई फर्क नहीं है. सो इफ देयर आर मोर देन टू ऑप्शन, ओके, द वर्ड इज देयर अमंग पॉसिबल कोर्सेस ऑफ एक्शन. अगर आपके पास एक से ज्यादा ऑप्शन अवेलेबल है, यहाँ जाओ, एक ही ऑप्शन है तो कोई दिक्कत नहीं है, यही करना है. बट इफ आई एम हैविंग टू और मोर ऑप्शन, अगर फ्लड आने वाली है, हाँ, तो भले दूध के भाव जितने भी ज्यादा, आई एम हेल्पलेस और मुझे वो परचेज ही कर लेना है, तो मैं दूसरी दुकान पर आगे भी पूछने भी नहीं जाऊंगा, बिकॉज आगे जाऊंगा तो यहाँ खत्म भी हो जाएगा. बट इफ आई एम हैविंग सर्टेन ऑप्शंस, ओके, और आउट ऑफ दिस ऑप्शन अगर मुझे कोई एडवाइजेबल डिसीजन लेना है, सो कंपेयर करना इंपॉर्टेंट है. तो कंपेरेबिलिटी होनी चाहिए. ओके, और ये कहां से हो पाएगी? इफ द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स, जो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को फॉलो करके हमने फिनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाए, ओके, उसको ध्यान में रख के बनाएंगे. इन मेकिंग डिसीजन द डिसीजन मेकर विल मेक कंपैरिजंस अमंग अल्टरनेटिव्स. ओके, वही जो बोला है कि अल्टरनेटिव्स जो अवेलेबल है उनमें से हम कंपेयर करेंगे, which is facilitated by financial information. ये ऑप्शन कहां से मिलेंगे उसको? तो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन से. मान लीजिए कि मुझे ऑयल एंड गैस कंपनी में इन्वेस्ट करना, ऑयल एंड गैस सेक्टर में इन्वेस्ट करना, ये इंडस्ट्री मैंने डिफाइन कर ली है, या मैंने ये डिफाइन किया कि अभी ईवी सेक्टर बहुत चल रहा है, ईवी सेक्टर चल रहा है, डिफेंस सेक्टर चल रहा है, रेलवे सेक्टर चल रहा है, इथेनॉल चल रहा है, ओके, रोड्स कंस्ट्रक्शन वाली कंपनी चल रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर मतलब. तो ये 5 या 6 सेक्टर मैंने आइडेंटिफाई तो कर लिए. बट ऑयल एंड गैस में या रेलवे में या ईवी सेक्टर में कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करूं, दैट would be decide from the financial information or the balance sheet or the profit and loss account. Okay, so वो अंडरस्टैंड कंपैरेटिबिलिटी हो सकती है. मैं 5 ईवी सेक्टर की कंपनी ले ली मैंने, तो मैं देख सकता हूं कि ये कंपनी में ये पोजीशन है, दूसरी कंपनी में ये पोजीशन है, तीसरी कंपनी बंद भी हो जा सकती है. ओके, तो even renewable energy source is again important sector for investment. Okay,
उसका भी फ्यूचर बहुत बढ़िया है। सो वो सेक्टर में हम इन्वेस्ट करने से पहले आइडेंटिफाई करें कि कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट करना है, तो दैट कैन बी अंडरस्टेबल बाय द financial statements. Comparability implies to have like things reported in a similar fashion and unlike things reported differently. देखो कंपैरिजन कब हो सकती है ये भी उसने बताया, रिपोर्टेड सिमिलर होना चाहिए, because in Indian accounting standard is there. So every listed company have to prepare their balance sheet or the financial statements as per the accounting standard. So आप कोई भी कंपनी के बैलेंस शीट ले लो, you can easily compare it. Okay, आप इजीली उसको कंपेयर कर सकते हो, ए कंपनी की बी कंपनी के साथ, बी की सी के साथ, ए की सी के साथ, बिकॉज देयर आर सर्टेन रूल्स कि इसी स्टैंडर्ड्स को फॉलो करके आपको ये प्रिपेयर करना है. ओके, सो comparability is there. Now consistency. What is consistency? So consistency of method over a period of time is a valuable quality that makes accounting numbers more useful. Okay. Consistent use of accounting principle from one accounting period to another enhance the utility of the principles from one accounting period to another, enhance the utility of financial statements to users by facilitating analysis and understanding of the comparative accounting data. Consistency આપણે ગુજરાતીમાં એને કહીએ સતત, कंटिन्यूअसली. अगर मान लीजिए डेप्रिसिएशन की मेथड है, सो देयर आर टू मेथड्स, वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, सेकंड वन इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. सो ये साल का अगर मैंने डेटा बनाया बैलेंस शीट, I will inform the accounting account person, kindly depreciate the assets by straight line method, और नेक्स्ट ईयर में इंस्ट्रक्शन देता हूं कि आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से करिए. ओके, करंट ईयर में ये बताता हूं कि लोन के ऊपर 5% इंटरेस्ट पे कीजिए, नेक्स्ट ईयर 10%, नेक्स्ट ईयर 15%, अगेन 8%. सो देयर इज नॉट अ काइंड ऑफ कंसिस्टेंसी इन आवर फाइनेंशियल स्टेटमेंट. ओके, कोई रूल्स या रेगुलेशन स्टैंडर्ड का कोई फॉर्म ही नहीं है हमारे पास. So if the financial statements are based on consistency method, okay, so it is reliable, it is useful for the other. Okay, so consistency should be there. हम जो मेथड ये साल अप्लाई करें वो 5, 10, 15, 20 साल तक चलती रहे, ऐसी मेथड हमें आइडेंटिफाई करनी है. हमें शॉर्ट टर्म गोल सर्व नहीं करना है कि इस साल के लिए ऐसा कर लो. ओके, चलो इस साल ऐसा है तो ये कर लेते हैं. That is not a long term goal. Okay, it is only a short term goal कि बस ये टाइम तक ये चल जाए, आगे उससे कुछ नहीं हो पाएगा. तो we need consistency. आज हम जो भी स्टेप लें, मान लीजिए आपने कोई पॉलिसी बना दी कंपनी में कि भैया 8 बजे के बाद जो भी आएगा तो 5 मिनट हम अलाउ करेंगे लेट, उसके बाद आपकी पूरे दिन की सीएल हो जाएगी. मान लीजिए आप विवेकानंद कॉलेज में जॉब कर रहे हैं, तो कॉलेज का टाइम मॉर्निंग है 7:30, तो 7:30 अप टू 7:40 10 मिनट तक अलाउ किया है. फिर 7:40 के बाद अगर आप आओगे तो हाफ सीएल अलाउ हो जाएगी, 1 घंटे के बाद आओगे तो फुल सीएल अलाउ हो जाएगी. दीज आर अ लॉन्ग टर्म पॉलिसी. अभी मान लीजिए कि आज आप लेट आए हो तो ये तो आपकी सीएल हो गई, कल कोई दूसरा लेट आया, उसके लिए हमने पॉलिसी को चेंज कर दिया. सो इट इज नॉट अ कंसिस्टेंट रूल. ओके, तो ये कंसिस्टेंसी वहां पर मैनेज नहीं हो रही है, तो इट इज नॉट रिलायबल डेटा. ओके, कोई कैसे भरोसा कर ले कि परसों कुछ और बना दे फिर से. ओके, सो कंसिस्टेंसी शुड बी देयर कि हम जो भी पॉलिसी फ्रेम करें, जो भी अकाउंटिंग रूल फॉलो करें, वो कंसिस्टेंट होने चाहिए. ओके, सो it is relative unimportant to the investors what precise rules or conventions are adopted by a company in reporting its earning. If he knows what method is being followed and is assured that is followed consistently for year to year. देखो क्या पता है, it is relatively unimportant. क्या unimportant है?
कंपनी कौन सी पॉलिसी फॉलो कर रही है, इट इज रिलेटिवली अनइम्पोर्टेंट टू द इन्वेस्टर व्हाट प्रिसाइज रूल्स और कन्वीनियंस। कंपनी कौन से रूल फॉलो कर रही है वो इंपॉर्टेंट नहीं है। व्हाट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कि जो भी रूल फॉलो कर रहे हैं वो कंसिस्टेंटली फॉलो करें। ओके, मुझे एज अ इन्वेस्टर, एज अ सप्लायर, ये तो मैं तो जानता भी नहीं हूँ कंपनी लॉ क्या है। अगर मैं इन्वेस्टर हूँ या मैं कोई गुड सप्लाई कर रहा हूँ या मैं एम्प्लॉय हूँ, तो मुझे तो ये पता नहीं है कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, कौन उसको रेगुलेट करता है, कंपनी क्या फॉलो कर रही है। बट मुझे ये पता होना चाहिए कि आज जो किया है वो अप टू 10 ईयर, अप टू 5 ईयर्स, अप टू 7 ईयर्स, अप टू 10 ईयर्स। ओके, इट शुड बी अ लॉन्ग टर्म डिसीजन। ओके, ये लॉन्ग टर्म चलता होना चाहिए। ओके, lack of consistency, lack of consistency procedures, uh, the value of intercompany comparison is sustainably reduced when material differences in income are caused by variance in accounting practices. Okay, so दो कंपनी के डेटा अगर मुझे ये भी कंपेयर करना है, comparison of data of two company, so it is also possible. Uh, so we have to follow the policy or the method consistency continuously. Next point, neutrality. Okay, neutral होना, neutral से वो identify neutrality. What is neutrality? Okay, जनरल केस में हम जो भी डिसीजन ले वो हर एक के लिए जनरल हो। कोई स्पेसिफिक पर्सन, स्पेसिफिक डिपार्टमेंट, स्पेसिफिक कंपनी, स्पेसिफिक गवर्नमेंट पर्सन, उनके लिए उनको ध्यान में रखते हुए अगर हमने कोई स्पेसिफिक डिसीजन लिया है या उनको ध्यान में रखते हुए बैलेंस शीट में कोई ऐसा चेंज किया है जो नॉर्मल कंडीशन में हम नहीं करते, तो उसको हम न्यूट्रल नहीं बोलेंगे। न्यूट्रल मतलब जो भी होता है वो टाइम पर वही कीजिए। ओके, सो न्यूट्रल मतलब जो रूल है उसको फॉलो कीजिए, तो हम बोलेंगे वी आर न्यूट्रल। ओके, बट अगर मैंने वो नहीं किया है तो मैं बोलूंगा आई एम बायस्ड। मान लीजिए अभी कोर्स वर्क में दो स्टूडेंट है, तो व्हाट इज माय लायबिलिटी, मैं दोनों को इक्वली ट्रीट करूं तो मैं बोल सकता हूं कि आई एम न्यूट्रल। बट मैं एक को ही पढ़ाता हूँ, एक को ही समझाता हूँ, दूसरे को बोलूंगा भैया तू बोल मत, तू मत समझ, तू मुझे क्वेश्चन मत कर, सो आई एम बायस्ड। मैं बोल सकता हूँ कि भाई मैं न्यूट्रल नहीं हूँ। ओके, तो इन द सेम फॉर्मेट कि हर एक कंपनी ने जो भी डेटा प्रेजेंट किया वो न्यूट्रल होना चाहिए। So neutrality is also known as the quality of freedom from bias. देखो अगेन ये वर्ड दिया, देखो bias. ओके, फ्रीडम फ्रॉम बायस, मैं बायस नहीं करता हूँ वैसा पर्सन, तो मतलब आई एम फ्रीडम फ्रॉम बायस, मैं फ्री हूँ। ओके, मैं बायस नहीं करता हूँ, सो आई कैन से आई एम न्यूट्रल। ओके, और ऑब्जेक्टिविटी, न्यूट्रलिटी मीन्स दैट formulating the implementing standards, the primary concern should be the relevance and reliability of the information, the results, not the effect that the new rule may have on particular interest or users. Okay, कोई नया रूल अगर आपको इम्प्लाई करना है तो कोई एक पार्टी के ऊपर क्या इम्प्लाई करेगा वो देखे बजाय मैं उसको सीधा इम्प्लाई कर दूं, सो आई कैन से आई एम न्यूट्रल। ओके, इसके ऊपर क्या इफेक्ट होगी ये मुझे देखना नहीं है। आई हैव टू थिंक कि जो भी डिसीजन मुझे करना है दैट शुड बी इन बेनिफिट ऑफ द कंपनी, दैट शुड बी एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, दैट शुड बी एज पर कंपनीज लॉ, दैट शुड बी एज पर गवर्नमेंट, जो लोकल गवर्नमेंट है उसके लॉ के रिगार्डिंग हो, सो मैं वैसा करूंगा। ओके, कोई इंडिविजुअल पर्सन के बेनिफिट के लिए मैं कुछ कर रहा हूं, सो आई कैन से आई एम बायस्ड। ओके, a neutral choice between accounting alternative is free from bias towards predetermined results. The objective of the financial reporting serves
many different information users who have deserves interest and no one predetermined result is likely to suit all users interested and purposes. Therefore, accounting facts and accounting practices should be impartially divided and reported with no objective or purposeful bias towards any user or a user group. Next is materiality. निधि जी आप क्या बताएंगे? मटेरियलिटी मतलब वो मटेरियल होना चाहिए उसमें, ओके, दैट इज डिजायरेबल फॉर द इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स। सो मटेरियलिटी को हम क्या समझते हैं? और व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ मटेरियलिटी? मटेरियलिटी यानी कि हम जो कंपनी में वो रॉ मटेरियल लाते हैं डेली बेसिस पर, यानी कि वर्किंग डे पर, तो रॉ मटेरियल जो है वो हमें जो भी क्वांटिटी में लाए हैं वो उसकी जो भी प्राइस है वो करेक्ट प्राइस पर हमें हमारे जो स्टेटमेंट है उसमें बताना है। जो भी प्राइस से हमने परचेज किया है वो प्राइस जो है वो करेक्ट होनी चाहिए। वो the meaning of the materiality is not that ki it is indicating a certain material. materiality मतलब मुझे जो चाहिए वही वो है, that is called materiality. मान लीजिए आज आपको फिनेंशियल कॉर्पोरेट फिनेंशियल रिपोर्टिंग ये आपका टॉपिक है और मैं आपको कोई दूसरा टॉपिक पढ़ा दूं, एमलगमेशन एंड मर्जर, सो दैट इज नॉट मटेरियलिटी, okay. So what it means, what the meaning of materiality? The thing you are defining, if you will get the same thing, will call it, it is material, it is material, it is my material, okay. मुझे जो चाहिए था वही वो है. So materiality should be there, okay. The concept of materiality permeates the entire field of accounting and auditing. The materiality concept implies that not all financial information need or should be communicated in accounting reports. क्या बोल रहा है वो? Materiality concept, not all financial information need or should be मतलब सभी चीज बतानी जरूरी नहीं है। ये आधा वाक्य अभी पूरा नहीं है। मटेरियलिटी कंसेप्ट क्या बोलता है कि आपको हर एक पार्टी को सभी चीज बतानी जरूरी नहीं है, ओके। ये इतनी लाइन है। इन अकाउंटिंग रिपोर्ट्स ओनली मटेरियल इंफॉर्मेशन शुड बी रिपोर्टेड। सभी चीज मत बताओ, बट जो इंपॉर्टेंट है वही बताओ, जो उसको चाहिए वही बताओ, ओके। मान लीजिए मुझे कोई एक्स नाम की प्रोडक्ट परचेस करनी है मार्केट से, ओके, और मुझे उसका क्राइटेरिया चाहिए, भैया ऐसी ऐसी प्रोडक्ट चाहिए, और मैंने उसको वेंडर को बताया कि भैया ये प्रोडक्ट चाहिए मुझे। तो अगर वो प्रोडक्ट में मेरी क्वालिटी अवेलेबल है, सो इट इज मटेरियल फॉर मी, ओके। और मटेरियल क्या इंपॉर्टेंट है? मटेरियल क्यों इंपॉर्टेंट है? मटेरियलिटी क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज इट विल लीड योर डिसीजन। आपके डिसीजन के ऊपर वो निर्भर करता है, ओके। मान लीजिए कि आपके पास 5 या 6 ऑप्शन अवेलेबल है, आपने पीएचडी में एडमिशन लिया है, तो वो एडमिशन करने के बाद आपको सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने 3 ऑप्शन या 5 ऑप्शन दिए होंगे, ओके। इट इज ओनली एग्जांपल कि सार्वजनिक यूनिवर्सिटी ने अगर मुझे 5 ऑप्शन दिए कि आपको पीएचडी कॉमर्स में करना है, बैंकिंग में करना है, फाइनेंस में करना है, ओके, या उसने सिर्फ आपको ये बताया कि आपको पीएचडी करना है, ओके। आफ्टर गेटिंग द एडमिशन यू आर केम टू नो कि आपका पीएचडी तो इसमें अदर सब्जेक्ट में होगा है। सो द मटेरियल थिंग इज दैट इफ यूनिवर्सिटी हैज एडवर्टाइज्ड कि पीएचडी इन कॉमर्स, सो इट इज मटेरियल थिंग, ओके। वो आपके डिसीजन को लीड करता है, ओके। आपको ये पता है कि मुझे पीएचडी कॉमर्स में ही करना है, मुझे अकाउंटेंसी में ही करना है, सो इट विल लीड योर डिसीजन कि ऐसे ही करना है, यहीं से करना है, ओके। और सिर्फ पीएचडी की एडवर्टाइजमेंट है, तो यू विल थिंक क्या करना है, कैसे करेंगे, कौन से सब्जेक्ट में होगा। सो इफ मटेरियलिटी इज नॉट देयर,
it will mislead your decision. आपके decision को mislead करेगा. Okay? Immaterial information may and probably should be omitted. Okay? जो भी immaterial है उसको शो भी नहीं करना चाहिए. ऐसी चीज जो डिसीजन के लिए हेल्पफुल ही नहीं है, मतलब उसका कोई इंपॉर्टेंट ही नहीं है, आइदर मैं उसको बैलेंस शीट में रखूं या ना रखूं, जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो उसको हम बोलेंगे इमटेरियल. इंफॉर्मेशन should be disclosed in annual report which is likely to influence economic decision of user. बट ऐसी हर एक चीज वहां पर होनी चाहिए जो डिसीजन, और कैसा डिसीजन, इकोनॉमिक डिसीजन. ओके, जो फाइनेंस से रिलेटेड है, इन्वेस्टमेंट से, इकोनॉमिक में सब होता है, फाइनेंस, सप्लाई, ये सब डिसीजन होते हैं. तो अगर ये डिसीजन लेने में आपको कोई हेल्प कर रहा है, ओके, सो ऐसे मैटर वहां पर होनी चाहिए. सो दिस विल लीड द यूजर. इंफॉर्मेशन दैट मीट्स देयर रिक्वायरमेंट इज मटेरियल. ओके, एक ही लाइन में देखो डेफिनेशन यहाँ पर है. इंफॉर्मेशन दैट मीट्स द रिक्वायरमेंट, ओके, उसको हम बोलेंगे मटेरियल है. મને જે જોઈએ છે મળી ગયું, that is my material. Okay. Next is timeliness. So we'll close in 10 to 15 minutes, not more than that, because 2 or 3 points left now. Timeliness. Okay, ये भी हमने देखा था कि डेटा प्रॉपर टाइम पे शो हो जाए. ओके, ये इंपॉर्टेंट है. प्रॉपर टाइम का भी होना चाहिए, और जो टाइम पर वो पब्लिश होना चाहिए वो टाइम पर वो पब्लिश भी हो जाना चाहिए. Okay? Timeliness means having information available to decision makers before it loses its capacity to influence decision. Okay? मान लीजिए आप रेलवे स्टेशन पर खड़े हो, ट्रेन आ चुकी है, बट आपको पता नहीं है, बिकॉज ट्रेन के ऊपर नंबर प्लेट ही नहीं थी कि वो कौन से नंबर की थी. वहां पर इंडिकेटर्स भी बंद थे, तो आई एम नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि ये ट्रेन कहां पर जा रही है. और ट्रेन चली गई, उसके बाद अनाउंस हुआ कि ये ट्रेन यहाँ से निकल चुकी है. ओके, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस अनाउंसमेंट? ओके, ट्रेन जाने के बाद कोई अनाउंस करता है क्या? ओके, सो इट इज नॉट अ टाइमलीनेस अनाउंसमेंट. ओके, आपको यहाँ पर इन्वेस्ट करना है, मान लीजिए आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हो, तो स्टॉक मार्केट में भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है. सुबह के 9:15 को मार्केट चालू होता है. ओके, 9:15 को आपके फ्रेंड ने कोई स्टॉक परचेस कर लिया, उसने परचेस 100 रुपीज के ऊपर, उसको पता है कि वो स्टॉक 200 रुपये पर जाने वाला है. ओके, उसने आपको एट नून बताया 12-1 बजे कि भाई ये स्टॉक परचेस कर ले. ओके, और वो स्टॉक की प्राइस तब 160 या 180 आ चुकी थी. अगेन टाइम इज इंपॉर्टेंट, कि कब बताना था, एट 9:15 या 9:30, जब उसकी प्राइस 100 रुपीज थी तभी उसको इन्फॉर्म करना था, 100 या अराउंड 100. ओके, बट वो 180 जा चुका है और उसका टारगेट 200 ही है, तो अभी ज्यादा स्कोप ही नहीं उसमें इंक्रीज होने का. ओके, सो ऐसी डिसीजन या ऐसे डेटा का कोई इंपॉर्टेंट नहीं है. ओके, जो बियॉन्ड टाइम मुझे पता चले. ओके, सो टाइमलीनेस मीन्स हैविंग इंफॉर्मेशन अवेलेबल टू डिसीजन मेकर्स बिफोर इट लॉसेस इट्स कैपेसिटी टू इन्फ्लुएंस डिसीजन. डिसीजन करने के लिए उसकी इंपॉर्टेंट खत्म हो जाए, उससे पहले उसको हमें डेटा प्रोवाइड करना है, उसको बोलेंगे हम टाइमलीनेस. Clearly, there are degrees of timeliness. Some reports needs to be prepared quickly, say is in case of. Okay, so ये तो बता रहा है एग्जांपल, बट टाइमलीनेस का ये मतलब होगा वेरीफाइबिलिटी. ओके, वेरीफाई मतलब 2 पॉइंट आ जाएंगे. एक तो डेटा वेरीफाई करने के बाद पब्लिश करना है, ये एक साइड है. And the data which is published, if someone is going to verify it is verifiable. Okay, मान लीजिए कोई आज मेरे नवयुग कॉलेज का कोई डेटा लेके आया, तो सर ये बताइए आपने तो ये ऐसा लिखा है, तो यहाँ पर है क्या? so I am liable to answer it. ओके, आपकी इसमें तो लिखा है कि इसमें ये कोर्सेज अवेलेबल है, इसका टाइम ये है, रिसर्च सेंटर ये टाइम पर चलता है. सो सर्टेन रिपोर्ट इज पब्लिश्ड, देन द अथॉरिटी इज लायबल. ओके, और कोई क्लेम करेगा तो वो डेटा वेरीफाइबल होना चाहिए. सो दोनों साइड से अगेन डेटा शुड बी पब्लिश्ड आफ्टर वेरिफिकेशन, एंड if the data is published it should be verifiable.
ओके, अगर कोई इसको क्लेम करे तो वेरीफाई हो सके, ऐसा होना चाहिए। कंजर्वेशन, ओके, कंजर्वेशन इज जनरली okay, these are not the important thing, conservation and substance over form. Okay, so it is the qualitative things. Uh, only the two points are there: directors reports and auditors reports. So after that we'll stop it. Directors report मतलब क्या? Who are directors? निधि या आपको मुझे बताना, डायरेक्टर मतलब कौन? हेलो, यस सर। डायरेक्टर कौन होता है कंपनी में? व्हाट इज द रोल ऑफ डायरेक्टर? मतलब डायरेक्टर किसको बोलेंगे हम? डायरेक्टर यानी कि कंपनी का जो सीईओ होता है, मेन पर्सन जो टॉप लेवल मैनेजमेंट पर आता है, जो सारा इवेल्यूशन करता है, अथॉरिटी जो है वो सबको अथॉरिटीज देता है, वेरी गुड, सुपरवाइज करता है। डायरेक्टर्स आर द ओरिजिनल डिसीजन मेकर्स ऑफ द कंपनी। ओके, वो बताते हैं कि कंपनी में ये करना है, ये नहीं करना है, तो उनका रिपोर्ट भी इंपॉर्टेंट है। ओके, so directors report is a report submitted by the directors of the company to its stakeholders। जैसे देखो, कंपनी के फिनेंशियल स्टेटमेंट में क्या क्या इंक्लूड होगा? एक तो ट्रेडिंग, पीएनएल, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, फंड फ्लो, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, ऑडिटर्स रिपोर्ट, तो उसका एक पार्ट है डायरेक्टर्स रिपोर्ट। ओके, तो डायरेक्टर्स रिपोर्ट डायरेक्टर बनाता है, किसके लिए? स्टेक होल्डर्स के लिए, अप्रेजिंग देम of the performance of the company under its direction। ओके, कि उनके डायरेक्शन में कंपनी कौन सी डायरेक्शन में काम कर रही है वो बताता है, कि डायरेक्टर्स का विजन क्या है, कंपनी क्या करने वाली है। It is an exercise of self-evaluation. The director's report expresses the opinion of director on the state of the company, explains performance and the financial company का performance, financial results, discuss company's plan for the expansion। Okay, so ये पूरा विजन आ गया कि डायरेक्टर्स कंपनी को कौन सी डायरेक्शन में लेके जाने वाले हैं। क्योंकि उनका फाइनेंशियल रिजल्ट क्या है, कंपनी क्या एक्सपेंड करने वाली है, का फाइनेंशियल परफॉर्मेंस क्या है। डाइवर्सिफिकेशन और मॉडर्नाइजेशन, ओके, tells about the apportion of the profit and elaborates company's future prospects and plans for the investment। देखो, प्रॉफिट अप्रोशनमेंट अकाउंट भी होता है। एक तो प्रॉफिट आ गया, नेट प्रॉफिट तो हो गया, बट उसको अप्रोशन कहाँ करना है, कंपनी क्या क्या विजन करती है, उसमें से रिजर्व कहाँ पर जाएगा, टैक्स कितना पे करना है, स्टाफ को कितना सैलरी पे करना है। ओके, सो ये होगा उसका अप्रोशनमेंट। एंड it is a synopsis of company's activities during the year। पूरे साल में कंपनी ने क्या किया उसकी ये रिपोर्ट है। Directors report should take the investors into confidence by providing useful insight into the activities of the business more than what the financial statements provided। Okay, last one is auditors report। Now auditors report, देखो कंपनी जो अकाउंट्स प्रिपेयर करती है उसको ऑडिटर ऑडिट करता है। ऑडिटर्स ने जो भी ऑडिट किया उसके बाद वो रिपोर्ट प्रोवाइड करता है। एंड ऑडिटर्स रिपोर्ट ये पूरी कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। So every company is subject to audit and auditor makes a report to the members of the company on its state of affairs। It is a comment on accounts and ऑन बैलेंस शीट। ओके, अकाउंट के ऊपर और बैलेंस शीट के ऊपर कमेंट या रिमार्क है। एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट and other documents attached to the financial statements which are laid in the AGM। AGM मतलब annual general meeting। okay,
हर एक कंपनी, हर एक लिस्टेड कंपनी को उनकी शेयर होल्डर्स के लिए एक एजीएम बुलानी पड़ती है। बहुत सारी कंपनी ऑनलाइन करती है, ओके, एजीएम बुलानी पड़ती है। ऑडिटर्स रिपोर्ट टू शेयर होल्डर्स contains an opinion as to whether the financial statement present a turn turn fair view of the state affairs of the company। उन्होंने सही में वो फेयर प्रैक्टिस या फेयर व्यू बताया है कि नहीं, वो ऑडिटर बताता है। In case of the balance sheet and the profit and loss, in case of the profit and loss account, they also report whether the books of account are in agreement and whether there is any deviation from generally accepted accounting principle। उससे कोई डाइवेशन नहीं है, मतलब जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है उनको ध्यान में रखते ही बना है या कोई उसमें चेंजेस है, तो वो भी ऑडिट रिपोर्ट बताता है। It indicates the areas to which shareholders and investors must give due attention while assessing the financial strength of the company whose securities are being considered for investment। Okay, so this auditors report, again it is only a basic part आज जो हमने डिस्कस किया। Okay, it is corporate financial reporting में आज ये हमने पूरा सेशन कवर किया। So if you are having any doubts or query, so you can ask me regarding today's session। आपको कोई भी क्वेरी कि सर ये टॉपिक समझ में नहीं आया, so you can ask। No, sir. Okay, so by tomorrow I will share the video, okay, in group। Okay, so both you and your colleague will access it। So it's for the day। So okay, I'm having one practical problem. Just you need to take print out before next Sunday। I'll share it to you। Wait for 1 minute। Okay, sir. Because it is a practical question, so if you are having a printout on your hand, so it is quite easy, because in mobile it is not proper, you can access it। Wait for it, I will share it। Wait for 1 minute। Kindly check, I have shared one PDF in your chat box, so download it and take a print out of it। Are you able to see it? Sir, your voice is not audible. I am told that I have shared one PDF in your chat box। So go through your chat box, just see the PDF I have shared and Yes. download it।
Yes, sir. Okay. It is only a one example, but it will take 1.5 hours to solve it. Okay. So in next session, we'll solve it. Just share it with your colleague also. Your the sir you are saying. Okay. સર આમાં ચેટ બોક્સમાં નહીં બતાવતા ફાઇલ. Just stop. I will. Just check your mobile. I have sent the copy on your mobile. Yes, sir. So take a hard copy of it. So it is useful for calculation. Okay. So it is for the day. Again, asking if you are having query, you can ask or we'll left the session. No, sir. I don't have any query. Okay. Thank you.